हेलो हेलो हेलो। There's what it is maybe मैं भूल गया। अच्छा किसी ने लिखा नहीं। आज फोर्टनाइट खेला, मैंने भी डाउनलोड कर लिया फोर्टनाइट। हेलो हेलो निहार। हेलो हेलो हेलो। फर्स्ट बट ओके। एक और रेड हुड, हाँ देखा मैंने। एक सॉइट सेकंड, लेकिन एविन भाई आप तो हमारे दिल में हमेशा फर्स्ट रहो। मतलब आज स्टार रेल की भी और आज गेंशिन दोनों की लाइव स्ट्रीम है। सोचा नहीं था। ऐसा कि ट्राई करोगे स्ट्रीम की ऑफ कैम? पहले देखूंगा कि प्राइवेट में वो गेम चल भी रहा है स्ट्रीम पर कि नहीं। फोर्टनाइट खेलोगे? ये फोर्टनाइट खेलो भाई, ये तो ऐसा है क्या? आने तो दो फोर्टनाइट। व्हाट द हेक, अभी आया कहाँ है? 5 बजे आएगा। लकी भाई गेम आया नहीं है, उससे पहले गेंशिन को लफड़ी आने। गेंशिन भी लाइक आने तो दो, आने से पहले लगे गए। अभी 5 बजे है उसका और रिलीज तो। हाँ चैट में है ना पुराने फोर्टनाइट वाले लॉन्डे। हाला हाला प्रकाश भाई, क्या हाल? अफुन बढ़िया। आज पता है मैंने अल्ट आईडी में मेन आईडी से ज़्यादा कर लिया, पता है प्रकाश भाई? रिवर्स नहीं मिनी काफ़ी अच्छा लगा। लाइक थोड़ा सा लाइक हार्ड है, लाइक जब तुम लाइक 7 मिनट के अराउंड पहुंचते हो तो 7 से 10 मिनट है, वो हार्ड लगा मुझे। और मैंने एक चीज़ देखी नहीं थी कि जब वो बॉस आता है तो टाइमर रुक जाता है। तो मैंने देखा नहीं था, मैंने अपने सेकंड रन में वो नोटिस किया कि जब बॉस आता है तो टाइमर रुक जाता है। जब तुम मारोगे नहीं टाइमर आगे बढ़ेगा नहीं। तो मेरे एक रन का ऐसे जीजी हो गया था। गेंशिन स्कैम्स कार्नेल वेट। तो कुछ अलग लिखता है बहुत दिनों से। बी काइंड एंड पोलाइट लिख रखा है। थॉट कुछ अलग लिखा। एक 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 भेजो क्या हट। कहाँ से वेपन चाहिए? अभी मत भेज, अभी थोड़ा एंजॉय करने दे। जब लाइक हाँ मुझे लगेगा कि हाँ कि तो ट्राई हार्ड करना पड़ेगा तब। अभी वो गेम मोड मुझे अच्छा लगा। सो यो ओ माय गॉड राव साहब, पूछ लो बस एफ क्या ना। ओ माय गॉड फोर्टनाइट के दिन राव साहब इज हियर। व्हाट द हेक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओसाका को जानते हो? मतलब ऐसे पर्सनली नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ बार उनकी स्ट्रीम पर गया। मोस्टली रात के टाइम लाइक डैगर की स्ट्रीम थोड़ी बहुत देख लेता हूँ।
जब भी टाइम मिलता है। सगर भाई को जानता हूँ, एक डैगर भाई की स्ट्रीम पे कई बार नाम सुना है, 1-2 बार गया हूँ, बट ज़्यादा देखा नहीं। हाँ जी, तो क्या फोर्टनाइट वापस आओगे? हाँ मतलब लाइक जो 1 महीने पुराना मैप है उसके लिए तो आऊँगा, उसके बाद हटा दूंगा। अश्रोबेक का कुछ गाइडेंस दे दो। देखो आपको स्नाइपर मिल गई है, हीलर वाली याओ कर लो, और जो आपके पास पायरो वाली फ्रीशा है उसको बिल्ड कर लो। अब डिपेंड करेगा आप स्नाइपर से खेल पाते हो कि नहीं। सेव द स्टॉर्म की में कैरी कर दो। बैच किया मैंने सिर्फ बस फोर्टनाइट डाउनलोड किया है, सेव द वर्ड नहीं भाई, वो भी बेस वर्जन डाउनलोड किया है विदाउट हाई टेक्सचर पैक्स फोर्टनाइट के, ऐसे फ्रेम्स आए। फाइनल गेम देखा है क्या मुशीद भाई? हाँ एस्टाक्रॉस की स्ट्रीम पे देख रहा था एविन, एस्टाक्रॉस को खेलते हुए देख रहा था फाइनल गेम। फाइनल को सब मस्त बोल रहे हैं, लेकिन निकालने के बाद डेहा वाला सीन हो गया तो हो गया, मैं तो फिर भी एंजॉय करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो बात वो भी है ना। श्रोडिंगर, आप बिल्कुल श्रोडिंगर्स कैट वाला सिनेरियो बोल दे रहे हो। बिल्ली जिंदा है या बिल्ली मर गई, वो तो तब तक नहीं पता चलेगा ना जब तक डब्बा नहीं खुलेगा। बैटल पास 50 तक रहेगा। हाँ देखा मैंने, लाइक ये वैसा वाला ओजी पास है, बैटल पास नहीं है। ये कैसे करते हैं क्या? वो ऑप्शन होता है ना फोर्टनाइट में। अबे तू सही में पूछ रहा है, मजे ले रहा है? शहर का भी करवा दो, उसका भी लैग मारता है बहुत। बता दूंगा, उसमें तो ऑप्शन होता है फोर्टनाइट में, नीचे ऑप्शन पे जाओ, बस बेस गेम डाउनलोड कर लो, एचडी टेक्सचर पैक वो सब हटा के। सही पूछ रहा था। हाँ तो जो फोर्टनाइट का जो लोगो होता है उसके साइड में जो 3 डॉट्स होते हैं उस पर ऑप्शन का बटन होगा, उस पर जाना तो आएगा ऑप्शन फोर्टनाइट, सेव द वर्ड, एचडी टेक्सचर पैक्स, शेडर्स फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट 12, और आई थिंक एक चीज़ और है, तुम सब पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। हेलो जेना भाई कैसे हैं? मैं सोच रहा थोड़ा सा वेट कर लूँ फोन आने के बाद, सबका रिव्यूज के लेने के बाद। दैट्स द स्ट्रैटेजी एवरीवन शुड गो। लाइक अगर आप स्ट्रीमर नहीं हो तो आपको यही करना चाहिए। अगर मैं स्ट्रीमर नहीं होता, मैं गेंशिन स्ट्रीम नहीं कर रहा था, मैं ही करता। मैं डे 1 पे ऐसे पुल नहीं करता, मैं पहले रिव्यूज़ का वेट करता। सी अगर तुम्हें पसंद है तो जाओ भाई, फिर मैं कोई नहीं रोक रहा। बट अगर तुम एक वैसे लाइक पावर स्टैंड पॉइंट के तौर पे देख रहे हो तो हाँ, आप जिस भी स्ट्रीमर को या जिस भी थ्योरी क्राफ्टर को या व्हाटएवर जिसको भी फॉलो करते हो, दैट्स अ लॉजिकल थिंग। लेकिन सिर्फ 30 डेज है, हाँ तो इंजॉय करो, फिर हटा दो। व्हेन इज लाइव इवेंट? 5-5:30 के अराउंड की शुरुआत। कितना ग्राइंड करोगे? ग्राइंड क्या करता रहा हूँ, आता हूँ थोड़ा स्ट्रीम पे खेलता हूँ, मन करता हूँ। मैं जितना गेंशिन खेलता हूँ स्ट्रीम पर ही खेलता हूँ, ऑफ स्ट्रीम नहीं खेलता। ऑफ स्ट्रीम दूसरे गेम खेलता हूँ। अब मुझे ऑन स्ट्रीम क्यों? सिंपल है भाई, यूट्यूब और कुछ खेलने की इजाज़त नहीं देता। अगर ट्राई भी करो तो चैनल के लगा देता है, तो बोला सेट। और ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, तू जानता है मैंने कितना ट्राई किया है। तू जानता है मैंने कितना ट्राई किया है। फर्स्ट बैन ही फ्री ना है, फर्स्ट बैन जैसे नीके। नीके तो क्या थंबनेल डालो। क्या क्या डालो कुछ ना। हेलो लवनीत भाई कैसे बहुत। हेलो जना भाई कैसे है? छुट्टी वुट्टी है या आने वाली है? कैसे सबसे फ्लेक्सिबल वेपन क्या है? क्या है? फवोनियस। अगर अभी निखिल भाई होते तो वो फैब्स लिखते, फैब्स।
ऐसा क्या कहता है, फैब है क्या? 5 स्टार पुल करना वर्थ होगा? आगे मैंने बताया, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वर्थ होगा कि नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कितना करेगा, बट क्या वो वर्थ है आपके लिए, वो आप ही जानो भाई। वर्थ इज अ वेरी, वर्थ एंड फन आर वेरी सब्जेक्टिव। क्या वो फन होगा, क्या वो वर्थ होगा, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आई टेल यू दैट। वह हमको इग्नोर कर दिया, अरे आप इग्नोर होने वाली चीज कहाँ जो आपको हम इग्नोर कर दे। अभी मैं घर पे हूँ, लीव पे, वो काफी फीवर था। अरे जीना भाई ध्यान रखिएगा एंड गेट वेल सून, गेट वेल सून। अगर ज्यादा लगे तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट। चलो भाई कैट गर्ल्स की टीम बताओ, ऐसा है क्या? फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल वेपन, फैब सीरीज ऑलवेज। वो डॉग के लिए स्टार स्कारलेट सैंड फुल करके गिल्डेड पे चलाओ या क्रिम्सन पे, जिसके भी बेटर पीस हो आपके पास है। सिंपल एज दैट। also सेंचुरी इज गोइंग ऑन। भाई साहब मैंने आज 3 कैरेक्टर लेवल अप किए रिवर्स में। ओ पैस की आंख, कितना रिसोर्स मांगते भाई। भाई मैंने आज 3 कैरेक्टर नाइट, बेकन ब्लूम और डी के लेवल अप किया। इनसाइड 1 मैक्स, मुझे इनसाइड 1 मैक्स किया मैंने। अब पाए कितनी रिसोर्स मांगते हैं। कितनी रिसोर्स मांगते हैं भाई। प्राइमर्डियल जेट कट इज मोर फ्लेक्सिबल, अगेन डिपेंड्स ऑन सिनेरियोज। मैं फवोनियस ही कहूंगा, फवोनियस किसी पे भी चिपकाई जा सकती है, इट डज नॉट मैटर। लोग तुम डीपीएस को ही फवोनियस चिपका दोगे, इट स्टिल वर्क्स। मेरे लिए मुझे फवोनियस ही है द मोस्ट लाइक फ्लेक्सिबल वेपन, किसी पे भी चिपक जाता है। लाइक फवोनियस सीरीज, काश फवोनियस काश एक वहां काश सैक्रिफिशियल स्पीयर भी होता। हाँ ये बोलने वाला था, बोला था काश सैक्रिफिशियल स्पीयर भी होता। नहीं है, क्या कर सकते। मेरी एटर्नी का लाइव 50 बहस किया। कितने बजे हो वही 5 फ्लिप लाइव स्ट्रीम आपको ना कर दूं मैं फ्लिप। फवरियस का बेस अटैक लो है, अगर वो ईआर यूज नहीं है तो डीपीएस काइडम में। बात इसकी नहीं ना, बात है अल्ट स्पैम की, घपा घप और टपाटा। जैगलिंग में मैं चाइल्ड और काजुहा दोनों को लेके घूमता हूँ। खत्म। तो बोलेगा तो जैगलिंग को भी फवोनियस दे दूंगा, तू बोल तो बेनेट को भी दे दूं। मैंने अगेन बोला ना, some things depend on upon scenario, it's not like but तुम फवोनियस किसी भी चिपका दो, इट वर्क्स। मैं वो कह रहा हूँ क्योंकि the ability to alt spam is very nice. that I've seen. जीरो ERT उस फैब की क्या जरूरत, सब जब सभी लोग फैब चलाएंगे वही तो, पूरी टीम को फैब दो और फिर घुमाओ। क्या सीरीज कैसी है, डिपेंडिंग कैरेक्टर टू कैरेक्टर। उसका मोस्टली तलवार ही काम आई है अभी तक, तलवार और बो। लेकिन अगर बो के केस में तुम कह सकते हो कि डायना पे फवोनियस भी चलती है। अच्छा इट डिपेंड क्वेश्चन, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। वही बोला ना, फवोनियस का सीरीज अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो, सिचुएशंस, व्हाट इफ, व्हाट बट। यू कैप स्काफ लेवल 1। हाँ अभी आर्लेचिनो को आने दो फिर लेवल अप करो। स्नोबे में 5 स्टार सेलेक्ट क्या करूँ, क्या निकालना है? वो अभी शॉटगन वाली लड़की, 5 स्टार फैनी फॉरनेथ, बंदूक मेरी लैला।
ऑन एलान सी एलर्जी के फायदे दूसरे हैं ना, परफॉर्मेंस के फायदे दूसरा। मैं तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस दोनों चलाता हूँ। अब जैसे इस टीम में मैं एलर्जी भी दे सकता हूँ, परफॉर्मेंस भी दे सकता हूँ। मोस्टली मैं एलर्जी प्रीफर करता हूँ। फ्री अटैक बफ इज फ्री अटैक बफ। ज़्यादा चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फवोनियस भी चला सकता है, एलर्जी भी चला सकता है, मैटर। एलर्जी का यही पार्ट मिलेगा बस इस टीम को। ईएम का करेंगे क्या, इट डिपेंड्स। अगर किसी टीम को ईएम चाहिए, लाइक से तो डबल हुटाओ चला रहा है, लाइक हुटाओ जिंचू जलान, तो उसमें एलर्जी के अपने फायदे हैं। फ्री ईएम प्लस फ्री अटैक। सम क्वेश्चन आर इट डिपेंड्स। तो करके फैन निकालता, हाँ 5 स्टार वाली फैन निकाल ले। आपकी 2 तरह की डीपीएस हो जाएंगी, एक स्नाइपर डीपीएस, एक शॉटगन डीपीएस। सेंचुरियन की अच्छी लग रही तुझे? नाइस। सेंचुरियन है भी अच्छी बात। 50-50 सेंचुरियन पे हारना इज गुड। बाजू का वेपन पुल करना कैसा होगा? कभी कभी ऐसा लगता है डेविड भाई आपको पता है फिर भी आप पूछते हो। समटाइम्स आई थिंक आपको पता है सब चीज़ों का आंसर फिर भी आप पूछते हो। बट इट्स अ वेरी नीच वेपन। चालीस फोर के साथ बट ब्लूम नहीं मेरी। वर्थ लेवलिंग अप। अगर आप अलेथम यूज कर रहे हो तो, अगर आपको क्विकन खेलना है, क्विकन एग्रीवेट खेलना तो ही करना। अगर आप हाइपर ब्लूम से खुश हो और चलो पकड़ा गया छोड़ो। वो आज का नहीं, वैसे रोज का ही लगता है। नो है बट कबाबा मीडियम भाई, कितने कबाब चाहिए? जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो और मेरे को मेरे प्रीमोस मिल जाए। इतनी हवस जेम्स की। पीस वीक मैन तो टेक्नारी only for Dendo I have waiting for neither. टेक्नारी इज द only Dendo character I have waiting for neither। लोगों मैं बता दे रहा हूँ, टेक्नारी का सिंपल फंडा है। आप उससे एग्रीवेट मतलब लाइक क्विक एंड टीम भी खेलोगे, मतलब क्विक एंड ऑरा वाली चीज़ें खेलोगे, मतलब आप टेक्नारी से मोस्टली स्प्रेड करोगे। तो अगर आप नाइदर निकालने की सोच रहे हो तो वो टिग्नारी की टीम में अच्छा जाती है, और अगर आप हाइपर ब्लूम का सोच रहे हो तो उसमें टिग्नारी यूज नहीं होती। मतलब अगर फोर्स करोगे तो हाँ, बट ऐसे नहीं। C4 is equal to more energy equal to more broken. What? Oh, Toma का C4 is equal to more not more broken. More energy means more comfy. More comfy means you don't have to build too much ER. You can go a little bit more on HP side. If you go on HP side, his shield is a little bit more tanky, which means you can tank a little bit more attack. Oh. टिग्नारी के साथ हाइपर ब्लूम करने का ट्राई कर सकते हो फुइना के साथ। टिग्नारी के साथ हाइपर ब्लूम करने का ट्राई कर सकते हो फुइना के साथ। हाँ, पर तुमको फिर भी तो चाहिए तो इलेक्ट्रो ही होगा ना एक। अस्सी क्या टिग्नारी का सिंपल फंडा, उसके चार्ज अटैक से अगर तुम हाइपर ब्लूम कराने की सोचोगे तो बहुत दर्द है। ई के बाद 3 तो कर लोगे, उसके बाद वाले चार्ज अटैक बहुत स्लो। मैंने बोला ना, फोर्स कर सकते हो, यू कैन फोर्स इट।
अगर टिगनारी नाहिदा साथ है तो डेलीज हो गए, नहीं डेलीज नहीं हो रहा, जिन हो गया ना। बहुत ज़रूरत है लेकिन मिलता नहीं है। किस चीज़ की बात हो रही है यूडियम भाई? कबाब्स की? अरे ऐसा बोलो ना ये लोग। आप मांगो, आप मांगो तो सही। Can't sleep. Let's go for a walk then. हेलो हाला हाला, नाइस। मैं बोला था मांगो तो सही। आपके लिए कबाब्स क्या है? मैं ड्रॉय को तक चटका दूं? ड्रॉय भी लाइक ये रैंडमली मुझे चटकाने की बात कहाँ से आ गई? अरे वो कुछ नहीं, ऐसे मन हो रहा था तो तुझे चटका दिया। मिल गई फाइनली 10-8। ओ ऐसा मेरा भी आज खुजली हुआ था, फिर मैंने बोला नहीं, मुझे जैंको भाई की तरह 3-3 नाइट नहीं चाहिए, फिर मैंने पुल नहीं करा। सॉरी जैंको भाई। इसको टेनेट मिले नहीं यार, मुझसे मेंबरशिप भी लो और मुझे चटका दो। टेनेट यूज भी नहीं करा, नहीं करना, करती क्या है वो, शील्ड देती है और अल्ट पे तो उसे रियलिटी डेफ डाउन करती है। टूथ फेरी निकाल लूं या चेंजलिंग निकाल लूं, डिपेंड करता है तुझे पॉइजन चलानी है या हीलर चाहिए। चेंजलिंग तभी निकालो जब पॉइजन टीम खेलनी है, पॉइजन नहीं खेलना तो चेंजिंग निकाल के कोई फायदा नहीं। हाँ मतलब अगेन को चेंजिंग के लिए निकालने है तो हाँ बस सील्डर वेरी गुड सिंगल टारगेट डीपीएस ऐसा है। शील्डर टेनेट एंड बेकम बूम मिली एक 10 पुल को। जैंको भाई को टैग करके बोलो मुझे क्या करो, मेरा डीके से काम हो रहा है। Is the shield block damage or reduce? It blocks damage, and if it's access, then shield breaks. Just like Genshin. कुकी के लिए फ्लावर नहीं मिला, 1 मंथ हो गया। ये सुन के मुझे बहुत मजा आया। देखना यहाँ मेरा स्किल इश्यू होगा, वो नहीं हुआ सर। In terms of survival and fast clear, right? Survivor and fast clear. E4 हो गया मेरा बेकन ब्लू। ये भी जैंको भाई को टैग करके बोलो मुझे क्या बोल रहा हूँ। मुझे क्या, मुझे तो स्प्लैश आर्ट निकालने से मतलब है। आपके सेम डीपवुड सर्किट मिला है, सेम स्कैम हो गया? हाँ व्हाट, मुझे जैसा डीपवुड सर्किट मिला और सेम स्कैम हो गया? और मतलब CRCD में जाने की जगह आपका इधर चला गया? सैड टू हियर दैट। रिपोर्टेड फॉर पर्सनल अटैक। वो मैं तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो शरीफ हूँ। वो कल वाला डीपवुड, ओ कल वाला भूल भी गया भाई मैं। खराब पीसेस याद नहीं रखता मैं, क्या करूँगा याद करके। इमोशनल डैमेज वैसी लाइफ में बहुत है, पीसेस से भी लेने लगूं।
सेंचुरियन इनसाइड 2 स्किन OMG। तूने नया वाला पैच देखा? अरे हाँ, तुम लोगों ने नया वाला पैच नहीं देखा होगा ना अभी। हाँ, ड्रॉय को और मजे दिलाता। ड्रॉय बोलेगा बुशित भाई पैसे खर्च नहीं करने। 1.1 जो एक हफ्ते में। Hey, is that gal really coming? You really think she'd announce her plans stealing to every living person before she acts? And she even made a security plan for us. Well, I'll say, she's either a maniac or a freaking crime genius. It is mine now. Are you satisfied with the answer, Miss AC? One last to go, Melania. The Rimmet Cup. Now, does anyone not want to visit the Rimmet Cup? Raise your paw, please. All right, it's unanimous. New Humans is a robotics company doing the right calls. They have never failed any mission as a security. I'm sorry, Mr. Iverson. Actually, I didn't know my entrance would be so straightforward. Catch them! I can't believe someone has found me. Am I exposed? The puppy is asking for your help. All right, puppy. Let's make a deal. Version 1.1 The Theft of the Rimmet Cup. पहला 6-star playable character Melina. A great thief won't confine herself to nighttime operations. The sleepy security guards would ruin all the fun in a challenge. ये alt animation है। दूसरा कैरेक्टर डॉगो। The puppy is delighted by your visit. He is about... फाइव स्टार कैरेक्टर डिगर्स। ये भी एक तरह का ऐसे तो डीबफर है एक तरह का। हाँ, इसका एक स्किल डीबफ करता है। Be together and do your own thing. That's the primo state of life, really. नाउ अब मेन चीज है जो ड्रॉय को बहुत अच्छी लग रही थी ना। फ्री स्किन फॉर योर एप्पल, पेड स्किन फॉर रेगुलस एंड पेड स्किन फॉर सांचोरियन। मेलिना और पिकल्स की स्टोरी। इवेंट, मोर इवेंट, टाइम लिमिटेड सीजनल चैलेंज, ये अलग तरह का गेम है। लाइक इसमें तुम अपने कार्ड यूज नहीं करोगे, गेम के द्वारा दिए गए कार्ड्स को। लाइक इस मोड के कार्ड यूज करो। और सिटी बेस्ड विल्डरनेस, तो जिसको जिसको स्काई को क्या है प्रकाश भाई आपका? स्काई स्क्रेपर, स्काई लाइन्स ना, सिटी इंस्पायर्ड विल्डरनेस। एक हफ्ते बाद आ रहा है पैच, तो अच्छा दिला। मैं सेंचुरियन बोला तो मुझे ध्यान आया, सेंचुरियन की स्किन आ रही है। $15 स्किन। हाँ, 3 वेल्किंग, 3 वेल्किंग, $15 या 3 वेल्किंग।
देखेंगे ऐसा है क्या? हाँ, देखते देखते स्वाइप हो जाएगा। वन टू स्ट्रीम आज है क्या? हाँ आज है 5:30 है। आर्काना कमिंग, नाइस जोक। 5:30 करो। अरे वो चोर नहीं है, एक्सेंट से मेरा दिल भी पेपर ने पिकल्स स्टार बॉल हु दीस। मैं फ्री टू प्ले कांट बाय सैड लाइफ। हाँ आप भी जतीश भाई की तरह फ्री टू प्ले हो, आई नो राइट। रियल हाइड्रो आर्कॉन कब रिलीज होगा? आई थिंक सो 2 साल बाद। कितना होता है? 3 वेल्किंग या $15 आई थिंक सो। हाँ आइदर 3 वेल्किंग्स और 880 होता है कॉस्ट, मतलब 15 या तो $15 या तो 3 वेल्किंग। विच बाय फॉर मी स्किन इज ऊ। हाँ तब तो आप स्वाइप मार ही रहे हो ऊ बोल के। सेंचुरियन बोला इसलिए ध्यान आया मुझे। प्रणाम हैंडसम हॉट सेक्सी स्ट्रीमर। वो फैटी भाई आप रोज इतनी तारीफ कर देते हो ना, बस मैं बहुत अच्छा जाता हूँ। अब हवेली पे रात को वो ये अश्लील काम करना बंद करो। वो ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है भाई, मेरी तारीफ हो तो ज्यादा। ये क्या क्या कमीशन मिलते हैं आपको? कभी दिखे नहीं। इसे कहते हैं जेंको भाई स्किल इशू। स्टोरी करो जाके, वर्ड रिक्वेस्ट करने पे खुलता है कमीशन। जेंको भाई लाइक ये आज मुझे ज्यादा ही टारगेट कर रहे हो। अभी डिस्कॉर्ड आओ बताना। हाँ और मैं आपको क्यूट बोलूं तो कहते हो तारीफ मत करो। वो क्यूट किस एंगल से दिख रहा हूं मैं? हर वो मतलब कुछ भी चैट से पूछो। ओ ऐसी चीजें चैट से नहीं पूछी जाती। चैट फिर मुझे बुली कर देगी। जो रात को प्रकाश आएगा गीगा लिंक कर। यू मीन टू से रात को प्रकाश भाई को कैरी कर रहा है ऑलवेज। हेलो नब अंकल, काट दूंगा और गायब भी कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मैं नहीं सोच रहा था, ऐसा नेबुला भाई ने बोला। यस कैरी स्नो ब्रेक। बाय द वे विवेक भाई आपने देखा मैंने 14 की पिटी पे वेपन भी स्नाइप कर लिया। विवेक भाई बोले कि दिल से कभी कभार प्यार भरे शब्द बोलने का मन करता है, बट भाई बोला है इसलिए बोलूंगा। इफ यू एबल टू सी 6 एनी वाज द कैरेक्टर व्हिच वन यू विल चूज? किशोर भाई आपको विजित भाई ऐसा आज तक इतना अच्छा आज तक किसी ने नहीं बोला मेरे लिए। बहुत अच्छा। बिग पंका नब अंकल बस साले। बुशित भाई ऑलवेज स्नाइप्स। यस आई वेरी हैप्पी यू हैव टू गेट स्किन फुल सेट कंप्लीट। वो नहीं। अरे बुशित भाई रियन किसका होगा? थोड़ा लीक दे दो। लीक वीक यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी लीक नहीं मिलती है। हमें इतना पता है कि फुरीना, बाइजू, आयातो और साइनो आ रहे हैं। कोई यहाँ लीक वीक नहीं देता। मैं व्हाट द हेक क्या? कम ऑन फैटी।
ऐसे काम मैं यहाँ नहीं करता। लिमिटेड वाला मिला है, ऐसा है क्या? लीक्स तो वो देती थी हैं? फेक हिट में नफ वगैरह आया क्या? नहीं इतना नहीं, उसका C2 C6 से घुमा दिया गया था अगर वो पूछा तो। सैनो आ रहा है, ओह नो, क्या इतना पसंद है? ड्रीम्स ओनली, ड्रीम्स तो बहुत देखते हैं हम। निकी का बोल रहा हूँ मैं। ओ भाई कल मैंने स्टोरी करी, मुझे बहुत डर लग रहा है निहार, स्टोरी इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई एम फीलिंग डॉरथी 2.0। आई एम फीलिंग डॉरथी 2.0 ही इज गोइंग टू हैपन हियर। साइनो क्यों आ रहा है? दैट्स अ रियल क्वेश्चन। देखो हर क्वेश्चन का आंसर हो ये जरूरी नहीं, और हर क्वेश्चन का आंसर देना ये भी मेरे लिए जरूरी नहीं। मैं आप लोगों को नो यू कह सकता हूं। साइनो कौन है इज द रियल क्वेश्चन। वो जर्नल क्या था? जर्नल क्या था? महात्मा? नहीं नहीं महात्मा तो नहीं था। 895। वो इतना तेज क्यों भाग रहे हो? अरे डिस्लॉक का देखो, डिस्लॉक का 1K हुआ क्या? 1K किया क्या स्टॉक में? और फिर आगे निकल गया मेरे से। जर्नल महामंत्र हो। ओ भाई आइस तो भाई साहब। रेडन आ रहा है, सुना है? रेडन इस पैच में नहीं, अगले पैच में सुनो। रेडन इस नहीं, अगले पैच का है। हाँ अगला पैच डेलीज हो गए, रेजिन हो गया, टबी हो गया। अस्टालिल का भी है प्रोग्राम आज दोनों के, आज दोनों के हैं। साइनो को भी स्टैंडर्ड में डालो, ऐसा है क्या? मतलब 3 आर्कॉन बैक टू बैक एंटी फुरीना। हाँ हमेशा ऐसा होता ही है। होता है ना कि नहीं होता? नहीं 3.2 में जोंगली था, नहीं फिर नहीं यार ठीक है 3.2 में एक गैप था। फ्री पुल्स ही फ्री पुल स्टार रेल में बहुत स्पॉइल कर रखा है बस स्टार रेल वालों ने बहुत ज्यादा। जोंगली बात है 4.0 में, मैं 3.2 की बात कर रहा हूँ। 3.0 में जब नाहिदा वाला पैच था तब टिग्नारी और जोंगली वाला था, उसके बाद साइनो और नीलू था, उसके बाद आई थी ना नाहिदा। तो याद नहीं उस पैच में रेडन थी कि नहीं। साइनो और नाहिदा वाले पैच, साइनो और नीलू वाले पैच में किसी आर्कॉन का रीरन हुआ था कि नहीं? क्योंकि मुझे याद है रेडन बाद में आई थी आयातों के साथ, तो रेडन तो नहीं थी, वैंटी भी उस टाइम नहीं था। उसका इसके बाद नाहिदा को भी डाल दो भाई। कुछ चीज़ों के मामले में गेंशिन बहुत स्टिंजी है भाई, बहुत ज़्यादा। लाइक मैंने इतने गाचा गेम्स देखे हैं, वो क्या कहते हैं 3-4 पैचेस के बाद जो यूनिट्स को होती है उनको स्टैंडर्ड में डालने लगते हैं या लाइक। हाँ लाइक यहाँ तो आती ही नहीं है भाई, इधर का तो अलग ही सीन चलता है पूरा। वो रूम चेंज किया, रूम चेंज नहीं किया है, वो दिवाली के लिए पर्दे वर्दे सब धुलने गए, कल धुलने गए थे, अब तो धुल गए, अभी तो लाइक रखे हुए। कमरा वही है, पहले यहाँ पर्दा हुआ करता था रूम वही है। हाँ कोई टिग्नारी पूछ रहा था ना, बैठ हुआ करता था ना वो 45। तो कितनी पुरानी बात होगी, उसके बाद कितनी बार आप आ चुके हो? व्हाट द हेक सास, मी मिसिंग दैट लेजेंडरी बेड।
इसलिए तो हटाया। कुछ ज्यादा ही मिस करते थे तुम लोग। वाटिन ने एक्ट 2 ने स्टार्ट में जो किया, आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैं तो भूल भी गया क्या स्टार्ट किया। ओ वो हाँ वो वेट, जितना मुझे समझ में तो आया था, अगर तू उसकी बात कर रहा है तो। मैं यहाँ नहीं बोल रहा मैं। कोई टिग्नारी का पूछ रहा था ना, श्योर भाई है ना किसकी टिग्नारी वाले। देखो किशोर भाई एक चीज देख लो, मेरा टिग्नारी कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है, तो माइलेज में वैरी। हाँ तो जो पूछा था तो योर माइलेज में वेरी विद टिग्नारी, क्योंकि मेरा टिग्नारी ग्रेट मैजिक 4 वॉन्डरर्स काशी वन होता 811 80 200 110 यार माइलेज में वेरी। अरे मुझे भाई आप भी नोटिस किया ये फैटी भाई, मतलब बस हैंडसम स्मार्ट डैशिंग बोल के चले जाते थे क्या? अभी कोई टूर्नामेंट चल रहा है, वेट व्हाट द हेक, अभी कोई टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें 2 कैरेक्टर से बॉसेस जल्दी करेगा उसको प्राइज। ओह माय गॉड, पैसे ही पैसे। My build is also exactly same. Nice then. Then it's nice. I think so आपके टैलेंट ज्यादा होंगे कि मैं टैलेंट्स किए नहीं है, बट एक्सेप्ट 580 DM I have. हाँ चलेगा। अब विश्व इतना सच नहीं बोला था। ऐसा है क्या? मैंने तो आप पे गूगली फेंकी थी, आप बोल्ड हो गए। आई कैप 833 नहीं, मैं बाद में 1099 करूंगा इसको, ऐसे ही बस, क्योंकि साइड में पता नहीं मेरा अभी का मेरा कोई पता नहीं, मूड भी बन सकता है, तो कांट से। वन का था। यो बुशित भाई, यो C6 वाले क्वेश्चन का आंसर प्लीज। हाँ बता तो दिया था किशोर भाई, आपने सुना नहीं था? अरे यार किशोर भाई कम ऑन, इतना अच्छा आंसर दिया था यार आपने, इतना अच्छा। इतना अच्छा आंसर दिया था। हेलो हार्दिक भाई, कैसन बा? हाला हाला हाला। सारा क्रेट रेट में, सारा क्रेट रेट में, सारा क्रेट रेट में, सारा क्रेट रेट में।
आखिरी वाला क्रिट रेट में चला जा। मेरे दो अनमोल रतन। फाइनली अब गैंशी से 800-900 प्रीमोस मिलेंगे तो मेरा एक पेटी गारंटी उठ जाएगी। फुल कैलकुलेशन चल रहा है, दर्द पूरा का पूरा। उसने ऐसे क्रिट रेट को स्किप मारा है ना जैसे वो मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस मारते। हाँ क्या ही बोलूं। कुछ बोलने को बचा है नहीं। अरे यार मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या स्पीड एंड किया है मैंने फ्रॉम इनिजुमा टू फाना थे ना। यहाँ ही बताओ यहाँ पे कौन कौन लोग लाइक अलेतम शुरुआत से लाइक यूज कर रहे हैं और कौन सी टीम में यूज करते हो? अलेतम नाहिदा में यूज करते हो या सोलो अलेतम करते हो? कश कर करके थक गया हो ऐसा है। थक तो हम भी गए हैं ये पूछ पूछ के। वो नहीं पता कि क्या पूछा था। नहीं ऐसा स्किप मारा जैसे मैंने नहीं ऐसा स्किप मारा है जैसे मैंने 4.2 है 4.1 बैनर्स। ओ नमस्ते। ओह माय गॉड जतीश भाई कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? इज द क्या आप भी खेलते हो फोर्टनाइट? इज द जाया से करने मजा आता है। बिग बाप ने क्यों किया? बस मजा आता है। काश जाया के कॉन्स्टेलेशन होते। शुरुआत से नहीं रीरन पे निकालना था बट यूज द लॉट। हेतम सोलो करता हूँ बट मोस्टली हेतम नाहिदा। अगर नाहिदा दूसरी टीम में रहती है देन हेतम। अरे वो नहीं मैं वो बताता कि अगर नाहिदा के साथ रहता है और अकेले रहता है तो कितना लाइक तूने जहां पर भी चला कितना यार के साथ घुमाता था। मल्टीप्लेयर हमेशा नहीं होता। हाँ आज का स्ट्रीम हो गया। मल्टीप्लेयर हमेशा नहीं होता मतलब जतीश भाई आज का स्ट्रीम हो गया। नहीं 5-5:30 के अराउंड गेंशिन और स्टाररेल दोनों का मल्टीप्लेयर हमेशा नहीं होता। नहीं आपके साथ तो हम हमेशा मल्टीप्लेयर करने को रेडी हैं। जतीश भाई भी लाइक भूषित भाई आप बहुत सस हो गए हो। समय ही नहीं है। ओ फोर्टनाइट हमसे नहीं होता। अरे कोई ना नो बिल्ड मोड खेल लूंगा आपके साथ। सिर्फ आ रही है ना वो तो आज पता चल जाएगा बट मोस्टली हाँ आ रही है। अरे यार है। अरे यार रोल हो जाना प्लीज प्रभु वाला पीस। इस पे 25% यार। प्लीज प्रभु 25% यार प्लीज। देखो प्रभु क्रिट रेट क्रिट डैमेज का तो मैं मास्टर नहीं बट ईआर का हूं ना। 25 यार 25%। आई एम जस्ट थैंक यू टू गुड।
जस्ट गुड। ER के मामले में हम जस्ट गुड। टैग फैटी भाई आप भी फैटी भाई। गाइस इस इमोशनल डैमेज के बाद मुझे आज की स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी। मुझे लगा नहीं था कि मुझे फैटी भाई से ऐसा पीठ पे छुरा मिलेगा। फाइनली इस डोमेन से आजाद हूं मैं। आजादी मिल गई मुझे इस डोमेन से। फिर नहीं मिलेगा कभी दोबारा। वो 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 ये किस तरह की टॉक्सिसिटी है भाई? व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर इज दिस? हो गया भाई, मेरी याया और किरारा दोनों के लिए पीसेस हो गए हैं भैया, हो गए हैं दोनों के लिए पीसेस हो गए हैं भैया, हो गए हैं। नाचूंगा थोड़ा मैं भी तो देखो, पीसेस सारे मेरे हो गए हैं। बॉय अंकिल आज स्ट्रीम है सर। HP %. Just too good. Just too good. Just too good. आ जाएगा। DPS की यार आ जाएगा। अंकिल आज भाई वही उसी टाइम या वैसे टॉक्सिसिटी जैसा मुझे चटकाने वाली थी टॉक्सिक स्ट्रीमर। वो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। निहार भाई सजेशन के बाद मैं तो एक कॉपी से खुश हूं भाई। जतीश भाई अपन MLB वाले पिलग्रिम तो नहीं है, अपन तो एक कॉपी से खुश है। टॉक्सिसिटी तो अंकल ही करते ऐसे झूठे इल्जाम। कृपया करके अगर मेरे ऊपर ना लगाए जाएं तो आई विल अप्रिशिएट इट। ओके These preposterous allegations against me are all false. All false. फाइनली अब ये डोमेन से आजादी। सिर्फ एक चाहिए, वैसे भी 412 गोल्डन कार्ड्स हैं। हाँ तो दूसरी पिलग्रिम्स के लिए सेव करो ना। आता है देखो। हाँ नहीं ठीक है, मैं से देखो। हाँ जतीश भाई मैं निकी को एज ए कलेक्टर के तौर पे खेल रहा हूँ ना। मैं भी आप अलग तरीके से खेल रहा हूँ। मैं तो भाई है कि ट्राई करता हूं हर यूनिट की एक कॉपी मिल जाए, देखने में अच्छा लगता। 160 वॉल पे हूं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस मेरे अकाउंट का RNG अलग है। RNG तो सबका अपना अपना होता है। मोस्ट टॉक्सिक अंकल ऑफ ऑल टाइम चाहिए। आप वो स्नो वाइट को इंक्लूड करके 3 MLB बता रहे हो या उसको एक्सक्लूड करके 3 MLB बता रहे हो? एक स्मॉल वाइट एंड एक रेडवुड। हाँ तो ठीक है ना, तो मैं भी बोलूंगा स्मॉल वाइट को करो, 4 हो जाएंगे। और बट अगेन दीदी भाई मैं तो सिर्फ कलेक्शन पर्पस के लिए कर रहा। आप अगर वो वॉल ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हो तो फिर वो अलग है।
अच्छे पिलग्रिम जल्दी नहीं मिलते। अच्छे क्या पिलग्रिम ही जल्दी नहीं मिलते भाई, अच्छे तो अलग बात है, पिलग्रिम ही जल्दी नहीं मिलते। बड़ा आपको वॉल ब्रेक करने के लिए चाहिए तो फिर वो अलग की बात है। अरे यार निहार मुझे एक चीज बता, जो उन्होंने वो स्टैंडर्ड बैनर पे हर दिन एक पुल 150 वाला मिल रहा है, वो करना लाइक सही है या नहीं है? क्योंकि वो देखने में तो सही लग रहा है, बट अगर लाइक लोगों की क्या राय है उसके रिगार्डिंग कि तुम्हें रोज एक स्टैंडर्ड पे डिस्काउंटेड पुल करना चाहिए कि नहीं? नोप, ओके नहीं ना, क्योंकि वो लाइक मुझे देखने में सही लग रहा है, बट लाइक अंदर से जब भी करो तो ऐसा गिल्टी सा फील आ रहा था। तो ओके नहीं ना, ठीक है, वो करने में तो अच्छा लग रहा था, बट वो अंदर से थोड़ा सा गिल्टी सा फील आ रहा था, तो मैंने वही सोचा एक बार पता कर। You mean to say Bushit भाई गिल्टी प्लेजर? नहीं, if you are a starter your games on should go in limited banner, ऐसा है क्या? आया है ऐसा है क्या विवेक भाई? मेरे को सिंगल पुल में जीबेट लगता है कभी नहीं मिलता। हाँ सेम 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 सेम, मुझे आज तक सिंगल पुल में कुछ नहीं मिला उस गेम में एक्सेप्ट नागा के। स्कैम है उधर सिंगल, वो अंदर से फील आता है ऐसा कि अंदर स्कैम है सिंगल पुल उधर। मैं समर अनी से स्टार्ट किया था, ये अकाउंट गॉट मॉडर्न। हाँ समर अनी से स्टार्ट किया था, होली अनीस एमएलबी। नहीं भाई कल मेरा दिन बहुत अच्छा था जतीश भाई। भाई कल रेटअप पे पहले रेडहुड पे जीत गया, फिर लिटर मिल गई जो चाहिए थी, जॉब लिटर मिली भाई इतना खुश हुआ मैं। ओ माय लेट्स गो। बहुत अच्छा दिन था कल जब लेटर ड्रॉप हुई भाई, बहुत खुश हो रहा मैं। उस गेम का बोकेन मिल गया लेटर से यार। कल लेटर कल जो काफी यूनिट ड्रॉप हुई थी, मतलब उसमें से लाइक जो अच्छी थी वो एक वही है रेडहुड, एक लेटर, रूपी थी ना उसका नाम, हाँ ये तीन थी, और लाइक एक उसका गिलिटीन का एक वो ड्रॉप हो गया था स्पेयर पार्ट, तो 1 स्टार हो गई है वो। अभी ऐसा है क्या? और हाँ विवेक भाई मैंने कल देखा, कल मैंने उसकी वो जो याव वाली स्किन है ना, वो जो उससे मिलेगी आपको 5 स्टार वर्जन वाली स्पेंडिंग इवेंट से, वो जब वो अल्ट करती है ना, वो उस फॉर्म में चली जाती है जिस फॉर्म में आप बोल रहे थे,
एंड एनिमेशन में पूरे टाइम उस फॉर्म में रहती है वो। जस्ट सेइंग, समर मैरी सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट तो आप हो जो सबकी नीके मदद करते हो। आपका तो अलग ही अकाउंट है, सो आप फुल पिलग्रिम यूज करते हो। मैं नहीं, मेरा मेरा निहार का तो, हाँ निहार का तो अलग ही सीन है, इसका तो स्टैक्ड अकाउंट है। मैं तो अभी लाइक 2B से स्टार्ट किया था खेलना, वापस कुछ नहीं मिला। 2B की जगह हेल्म की एक और कॉपी मिल गई। लाइक अब हेल्म थी मेरे पास पहले से 1 स्टार, तो 2 हो गई, बट अंदर से बहुत दर्द हुआ। मॉडर्निया बेस्ट, वो तो पूछने वाली बात नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज मुझे वो लिली वाइस का पिलग्रिम वर्जन चाहिए। आएगा आएगा, क्वीन के रूप में आएगा। देखो मुझे तो वो रपुंजल का वाला वर्जन चाहिए जो अभी दिखाया है भाई। होली भाई, क्या ही वर्जन अभी करंट रपुंजल का। रपुंजल स्कारलेट तो कुछ भी दिखती है भाई। और रपुंजल और स्कारलेट तो कुछ भी दिखती है भाई। आई प्रेफर मॉडर्निया देन स्कारलेट। वो ऑलवेज भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नई वाली की, मैं पुरानी वाली स्कारलेट की बात करता हूँ भाई। अलग ही दिखती है भाई वो तो। लास्ट कब है? 5 साढ़े 5 के बीच। वो पुरानी वाली स्कारलेट तो कुछ भी दिखती हो, पुरानी वाली रपुंजल तो भाई कहाँ देखूं। वो जो अभी स्टोरी वाली रपुंजल है, अभी कहाँ देखूं मैं। वेट, हाँ ठीक है। नीके में रपुंजल, हाँ नीके में एक स्क्वाड है जिसका नाम गॉडेस स्क्वाड है। उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो उनका जो नाम होता है, उनका कोड नेम होता है, वो फेरी टेल्स की यूनिट पे बेस्ड होता है। तो स्नो वाइट, रपुंजल, सिंड्रेला, जो लाइक मेन गॉडेस स्क्वाड की यूनिट होती है। स्कारलेट मेन गॉडेस स्क्वाड की यूनिट नहीं है। जो मेन जो गॉडेस स्क्वाड की यूनिट्स होती हैं, सबके नाम किसी फेरी टेल की यूनिट्स के नाम पे। और डॉरेथी, सिंड्रेला तो लिली वाइज है। ऐसा है क्या? इमेजिन ये स्पॉइलर हो जो मुझे पता ना हो, तूने बता दिया हो, या तू मजाक कर रहा हो, मजे ले रहा हो और मुझे पता ना हो। बहुत सारी चीज हो सकती हैं, बहुत सारी। एक फ्रेंड ने स्नो वाइट नहीं स्मॉल वाइट, अरे तो एक स्नो वाइट भी तो है। स्मॉल वाइट का तो नाम स्मॉल वाइट द इनोसेंट डेज है। भाई वाली स्नो वाइट, स्मॉल वाइट देख के कितना दर्द होता है भाई। स्मॉल वाइट देख के कितना दर्द होता है भाई। अब आपकी स्नो वाइट देखो भाई साहब, डेज फ्रॉम इनसाइड। करंट स्नो वाइट को देखो, डेड फ्रॉम इनसाइड। दिल से बोल। तो स्मॉल वाइट अच्छी यूनिट है, ये सब निहार से पूछो। ये सब निहार से पूछो, मैं भी उसी से पूछता हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी, देखो यहाँ पे कुछ भी स्टार रेल का पूछना हो तो ड्रॉय से पूछो। ड्रॉय भी लाइए खाम मेरे पे काम फाड़ रहा है। और कुछ भी अगर नीके से पूछना है तो वो निहार से पूछो। और कुछ भी अगर कुछ भी अगर ब्राउन डस्ट से पूछना है तो जतीश भाई से पूछो। कुछ भी हॉन्काई इम्पैक्ट द थर्ड से पूछना है तो जैंको भाई से पूछो। मुझे आप किसके लिए हो? और पे काम फोड़ने के? हाँ
हाउ लॉन्ग टू स्ट्रीम? 10 से 20 मिनट। लॉस्ट आर्म 2 जस्ट लाइक लाइज ऑफ पी। स्मॉल वेट अच्छी यूनिट है और आप बता रहे हो। हाँ तब मुझे क्या, मैं तो फिर भी बिल्ड ही कर रहा, मेरे लिए तो काम की यूनिट्स है सारी। देखो मेरी टीम में देखो मेरे पास नागा टिया है, लिटर है, तो ये 3 सपोर्ट हो गई। अभी ये इससे पूछ लूंगा मैं मुझे क्या बनानी है टीम। हाँ फ्री में साथ ट्यूटोरियल क्या ट्यूटर बना दो एंड मुझे ही चटका। सी देखो जतीश भाई, एक आई थिंक निहार ने एक बंदा बताया था स्काई नाम का, वो लाइक प्रॉपर टेस्टिंग करता है, तो उसने यही बोला कि जो रेडवुड है वो उन लोगों के लिए अच्छी है जो मैक्रो से एलिस नहीं करना चाहता। एलिस है ना उसका नाम? हाँ, जो मैक्रो से एलिस नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों में से। मतलब उसने वर्डिंग थी, अगर आप बूमर हो तो रेडवुड आपके लिए बहुत अच्छी है। से बोला अगर आप बूमर हो तो रेडवुड आपके लिए बहुत अच्छी है। ऐसे बोला डन। आई डोंट माइंड। आई डू मैक्रो स्टार्ट विद एलिस मैनुअली। You do you। मैं तो एलिस को भी ऑटो पे ही रखूं। क्या आप लाइव स्ट्रीम करोगे ना भाई? हाँ कितना, बट अभी कुछ का डाउन चलने दो भाई, हमें क्या है। सी ड्रामा ना होने से नीके को ज्यादा फायदा है। भूल गया मैं क्या करना। अरे यार मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, मेरा माइंड अचानक से फ्रीज होता है। 19 से 21 ऑटो तभी अच्छी है व्हेन यू हैव चार्ज स्पीड और ओवरलोड गियर। अगेन नहीं यार, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो ऑटो ही करूँगा। यार भी लाइक यस यस यस, सुधरेंगे नहीं। हेलो विवेक भाई कैसे हैं? अरे विवेक भाई आप फोटो बदल ली। हेलो एनडी भाई कैसे हैं? निकल गए आप तहखाने से या अभी भी फ्रॉस्ट मैंने फंसा रखा है? 45 पुल नो मैक्स सर सैज। मैं हंस नहीं रहा था। यस जिनके पास एलिस है, हाँ मेरे पास भी है, बट अब अगर मुझे पता है कि एलिस से मुझे गॉड टियर गेमर बनना पड़ेगा और स्नो और रेडवुड से मुझे गॉड टियर गेमर नहीं बनना पड़ेगा। कैन आई कम? ओ भाई सिंपल भाई। मैच खत्म हुई, जब से मैच खत्म हुई है भैया भाव नहीं दे रहे कुछ भी भाई, कुछ भी भाई। भाव तो मैं वैसे भी नहीं देता। ये सही था। दोनों स्ट्रीम एक साथ है सर। देखो जो मैं गेंशिन की देखने वाला हूं, जो स्टार रेल की देखने वाला है कोड डालते रहना। जो भी स्टार रेल की देखने वाला है वो कोड डालते रहना इधर। नहीं ऐसा नहीं है विवेक भाई, कभी कभार मिस हो जाता है बट यार मेरे क्वेश्चन का आंसर बोलना आया।
लिटर रेडवुड सेंटी एनीस एंड मॉडर्न हो डिसेंट है वो डिसेंट। तो मैं फिर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नहीं, लेट्स सी नेविगेट। कितने बजे है वो? 5 बजे। 5 बजे मैं चला जाऊंगा। अरे 19 से 21 अगले दिन। थेरम तू इतना गॉड गेमर कैसे है यार? लाइक कैसे? क्या ही करूं? वैसे वन गर्ल्स है मेरे पास। ऐसा है क्या? लाइक्स करते हो मेरे पे, दर्द हुआ मुझे। पर ना मेंटोर जी कुछ भी। स्नो ब्रेक तो बस ओपन करके ही सर हाँ वो तो है। मेरे तो कल मजे आ गए जतीश भाई। 10 पुल में मॉक्सर और 15 पुल में वेपन। ऐसे 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 धप धप दोनों चीजें ले ली ना मैंने। 25 पुल में सब स्नैप हुआ है। ऐसा धप स्नैप हुए ना सब। अपन खुश। हाँ बट इस बार तो भाई डिजिस भाई बहुत छापने वाले हैं ये लोग। कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। इस बार तो भाई ऐसी खतरनाक स्किन डाली है ना भाई। हम लोग यही बोल रहे थे भाई ये स्नो ब्रेक कंटेनमेंट, ये गेम स्नो ब्रेक कंटेनमेंट से नीके ब्रेक कंटेनमेंट बन गया है। ये बात कहते हैं स्नो ब्रेक कंटेनमेंट से नीके ब्रेक कंटेनमेंट बन गया है। ऐसी खतरनाक स्किन डाली है उधर। हाँ स्नो ब्रेक बिकमिंग निकी। हाँ इस बार की स्किन्स दिखाऊं? डिस्कॉर्ड वाला दिखाता। नेक्स्ट लेवल स्किन है। या प्रकाश भाई से बोल देना दिखा देंगे वो। तो अपने लेने का बिल्ड दिखाना एक बार। Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. मुझे लगा बिल्ड के नाम पे नहीं भाई बाहर घंटी बजी थी उसके लिए गया था। लेने इस आईडी में तो नहीं है। एक भाई आईडी शॉप करता दिखाता क्या ना। पैसा डिजिट बाय पैसा। हद या पैसा? पैसा स्विम स्वीट लेफ्ट स्विम स्वीट राइट। कर ले अपनी जेबे टाइट। अरे दिखाई दे रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। आप बोल रहे हो भाव नहीं देता। अब मैं आपको पूरा भाव दे रहा हूं तो आप बोल रहे हो पूरा भाव मत दो। ये बात सही थी। मैं फंस गया। दिखा रहा। गिव मी 2 minutes।
टैबी से मिल के आ जाओ, फिर लेने को आपसे मिला। हाँ हाँ पता है तू नब है। आज 2 स्ट्रीम है क्या? आज दोनों स्ट्रीम एक साथ। ओ माय गॉड, ऐसा क्या हो गया? एमटी भाई आजाद हो गए क्या? आप कौन सी स्ट्रीम करोगे? मैं गेंशिन करूंगा, तुम लोग मुझे पीछे से स्टार रेल का बताते रहना, क्योंकि मुझे पता है आप तो स्टार रेल ही देखने वाले हो। क्यों? सही बोला ना? ट्रॉय भी लाइक पुश भाई। ये रहा विवेक भाई मेरा लेने का पुराना बिल्ड, वॉन्डर स्ट्रूप वाला, ठीक है। इसमें मेरा है वेट, कुछ तो नहीं, एक पीस गड़बड़ है, 61 नहीं था। 1 पीस इज डिफरेंट। ये मेरा रहने का रहा पुराना बिल्ड, हंटर मिलने से पहले। ये 4 पीस वॉन्डर स्ट्रूप पे था। ये है मेरा 65, 270, 124। अब जो करंट बिल्ड है, जो लाइक जो थोड़ा सा नेवी के पीसेस के साथ हॉट स्वैप करना पड़ता है, वो बिल्ड है ये, अगर मुझे लाइक लेने यूज कर रहा था। आपका सिमुलक्रा लेने वो हंटर 60, 271, 147 एनर्जी चार्ज आता है काफी इस वाले में। तो 60 प्लस 36, 24 मानता हूँ मैं। हम ही लेने का 3 स्टैक तो कभी नहीं मांगता स्टार्टिंग में। हाँ बेनेट कैल्ट के अंदर, देन यस, उसके बाद तो फिर तो 60 प्लस 30, 60 प्लस 20, 85 है। गेंशिन स्कैम 7 मिनट्स मोर। हाँ मैं 5 बजे के अराउंड चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो 5, 5:30 के बीच उनका रहता है हमेशा। आज एचपी स्टैंड मिला विद सीआर एंड सीडी, बस 4 बार डिफेंस रोल हुआ और कुछ नहीं। इट्स एवरीथिंग इज एवरीडे थिंग्स ना हो यहाँ पर। विवेक भाई या चले गए? नॉट रियली, मैं एक्चुअली 4.2 स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड डू लमाओ। स्टारिल वैसे भी सिंपल है, नया मैप आएगा, गेंशिन एनिवर्सरी होगी एज यूजुअल है। ऐसा है क्या? आप भी तो देख लो विवेक भाई, अगर आप हो यहाँ पर तो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। जो मोस्ट प्रॉब्ली ये आई थिंक समझे कौन सा पीस चेंज करना है, ये भी नहीं करना। ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरा चेंज हो इतना लाइक ये, लेकिन इससे बेटर मेरे पास है नहीं। आई तो मैं ये दे सकता हूँ। अटैक इज नॉट बैड, बट हाँ यहाँ पे एक और पीस है। कहाँ गया वो पीस? अरे वाला पीस हटा दिया क्या? मैंने हटा दिया। नहीं, वो इसमें मिला था ना कल, इसमें मिला था ना कल पीस। यहाँ पे ये रहा, पायरो डैमेज ऑन सेट है। थोड़ा सा एनर्जी चार्ज में ज़्यादा कहूँगा, बट ऐसे ज़्यादा कहूँगा, हाँ ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि अगर ये पेयर अप होगा काजुहा के साथ तो 147, 150 जगह 160 ज़्यादा ही यार इस पर। थोड़ा सा यार, अरे यार कहाँ से भयानक आ रहा है। इसमें 6 है, इसमें 6, 10 इधर से आ गया, 15 हाँ इधर से और इधर से। बट आई डोंट माइंड लेने पे यार, थोड़ा ज़्यादा भी होगा, आई डोंट माइंड। पहले में तो 110 हाँ थोड़ा ज़्यादा है, 160 थोड़ा ज़्यादा है। मैं ट्राई करूँगा इस पीस पे यार बिल्कुल ना हो नेक्स्ट टाइम। इन 2 पीसेस में काफ़ी यार है। 20 इधर है, 10 इधर है, 30 ऐसे हो जा रहा है। काजुआ के साथ यूज़ करने पे 10 फ्री मिलेगा, 40, 140 के अराउंड है, विच इज़ मोर देन इनफ।
जज बेस्ड। यहाँ साइड में फायदा नहीं मिल रहा, नहीं मिल जाएगा भाई। मुझे भी अब जाके सारे मेरा एक हंटर हुआ है और एक गोल्डन ट्रूप हुआ है। अभी मैं लाइक औरों के लिए ढूंढ ही रहा हूँ। मुझे अभी तक ढंग का अटैक सैंड्स नहीं मिला। मुझे ये देख रहे हो, मुझे ER सैंड्स मिला हुआ है और मुझे HP सैंड्स मिले हुए हैं। मुझे अटैक सैंड्स नहीं मिला अभी तक ढंग का। असली दर्द यही है। अटैक सैंड मिल जाए तो मेरा लेने का काम से, या लेने का तो फिर भी ठीक है। मुझे लेने के लिए मोस्ट वाले सैंड्स का नहीं इतना फर्क है। मुझे लेने में मोस्टली वो चाहिए, बेटर फ्लावर चाहिए मुझे लेने के लिए। मुझे इससे बेटर फ्लावर चाहिए। एक खराब नहीं कहूँगा मैं उसको, बेटर ऐसा पीस मिल जाए तो मजा आ जाए। और कुछ पूछना है? ओके, गेंशिन का गेंशिन का ऑफिशियल चैनल ना भाई, नेपाल। अच्छा स्ट्रीम स्टार्टेड। हाँ मैं गेंशिन पे जा रहा। गेंशिन की 5:40 पे दिखा रही है। हाँ मैंने गेंशिन की आगे किसका है क्या? मैंने गेंशिन की आगे किसका है क्या? अच्छा तो आई डोंट वांट। अच्छा देखते हैं तब तक। हाँ साइड में खोल दे रहा, वेबकैम रहेगा ठीक है। ना 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 ना। अभी के लिए कम किया। क्या 2p के लक इंक्रीज होता है क्या? हाँ ऐसा भी कोई तरीका है लक इंक्रीज करने का? इस पे लिखा था 5:40 पे स्टार्ट होगी। टाइम किस साइड? ओ साइड। ओ The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. अरे क्या हो रहा है भाई?
Hello? Hello? Oh, समझ गया. Hello, my name is Hua. Yeah. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity. With evil spirits wreaking havoc across multiple locations, the Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Beautiful creature, bless you for choosing to dally here. Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you acquainted with the goddess Sidrilla? I really like this way of telling story. Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. The beauty is eternal. Hey, we made it! What's up, guys? Most haunted place in the Luofu. Follow and share. Or else I'm gonna... I think I just found the Yo, what's up? You're finally here. Captain Huahua, should we start the ghost talk now? Captain? You can just call me Huahua. Alt. Got your alt. The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. Alt got tier है, मुझे लगा alt दिखाएंगे. लो पहला कोड ले लो स्टार रेल का. सस्ता टिल्लू का और जंटी डाल देना ड्रॉय डिस्कॉर्ड पे. That looks like Liu. Luofu, huh? Luofu is Liu. Luofu, it's not looks like Liu. It is Liu. मैं Luofu को Liu ही बुलाता हूँ. I think उन्होंने टाइमिंग ऐसे कर रखी है, पहले ये आएगा फिर वो आएगा. खेल गए गेंशिन वाले दोनों एक साथ नहीं दे रहे, दोनों को क्लैश नहीं करवा रहे. पहले ये आएगा फिर वो आएगा. Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the Interastral Peace Media's Haunted Xianzhou special program. I'm your ghostly host with the most. 15 तारीख को नया पैच है. For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Xianzhou's weirdest and most wonderful. Hi everyone! I'm 540. the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful. Hey guys, Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. I mean, Owlbird's Haunted Xianzhou special program. इसको देखो. Huh? Owlbird, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now,
As our audience will be well aware, the Xianzhou is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Luofu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the Heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a Heliobi? People say that the Heliobi are the result of accumulated grievances. Check करते रहना कि Genshin की start ना हो जाए. Deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Huh. Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me. The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden. Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day, but when the sun goes down, things get a whole lot. The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Luofu. Heliobi are experts when it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and Arumatan Spectral Envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wander the garden. A word of advice? Keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Xianzhou's #1 streamer in no time. Funny you should mention. ये कौन सी गेम की है? Genshin का दूसरा Fixtral गेम. Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Xianzhou's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Xianzhou fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? Fire breathing, Kwaiban performances, headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? I just have a lot of transferable skills. That's all. First half में ज़्यादा होता है. First half में 10 pool होते हैं ना. Speaking of which, हमसे ज़्यादा होंगे the first half brand new version 1.5 Trailblaze Continuance, a Foxian tale of the hunted. The ghost hunting squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Xianzhou. लेकिन second part दूसरी चीज के अच्छा होता है. Is divided into 5 chapters and starts off with the ghost hunting squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly reverie. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Xianzhou internet searches in no time! See? I
knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Gwen, Continuance, their other word Trailblazers for will also be facing fixtural garden dangers in both Lawfu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Cool. Oh, and I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's fixtural exploration, Trailblazers can jointly manage Gwen-Knifen socials. Posting threads is a great way to create discussion among Xianzhou netizens and fans of the supernatural. Huh? Oh, I can't wait! We're gonna get the whole Xianzhou talking. Seriously, this is once-in-a-lifetime material. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the horizon. Oh, you know, Miss Gwen-Knifen, there's always room for creative talents at the IPM, and I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names in the company. The Albert stamp of approval goes a long way. I see free light cone. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. That's cool. I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone, hey, over here. What do you think, Guilings? Let's give it up for Gwen-Knifen's generosity. मुझे बहुत अच्छा लगा वो wolf देख wolf. Still, I hope the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Xianzhou's most formidable forces, the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the Ten Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier! Well, before you get too excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the fixtural garden situation. Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that. मुझे एक कॉपी मिली है पता है टोपैस के बाद एक कॉपी alt Twooo is a wind-type character following the path of abundance and a trainee judge of the 10 Lords Commission. Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen! Yeah! Does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing! Just beginning to doubt her credentials? How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Twooo is essentially a magnet for evil. Something that comes in super handy for the 10 Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. 4 stars क्या है? To her, I want to see 4 stars क्या है Twooo's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the Xianzhou. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. 20. Anyway, I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Twooo was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yep, it was a heliobus. That very same day, the 10 Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Twooo under their wing.
I get it. So Huohuo is kind of like a 10 Lords guinea pig. I think Herta had a similar fate planned for me. That may have been part. 100. However, the Ten Lords realized that Huohuo had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby. How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the 10 Lords? Oh, Huohuo's well aware she just scared a cat. That's why she watches so many horror mercia, to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. I'm here all week, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huohuo's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huohuo's basic attack, Banner Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huohuo bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent teammates. Are you sure she's not trying to surrender? Huohuo's ultimate, Tail Spiritual Domination, can regenerate allies' energy and increase their attack. Whoa! So that's what a heliobus looks like. No wonder it took the 10 Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huohuo has a few special talents. After using her skill, she receives Sacrifice Life. Sacrifice Life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice! Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad's gonna kick butt. That's not all. Huohuo's technique, Fiend Impeachment of Evil, sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. Nice moves, Huohuo. Still talent दिख रहा था कैसे? Hey, easy on the training. मुझे talent दिख रहा है, talent में भागते कैसे? When you're dealing with Helioba, the more judges, the better. That's why the 10 Lords appointed a seasoned veteran to bring up the rear. I'm talking about none other than Hanya. Oh, ये अब God tier, अब मजे लो. Hanya is a netherworld judge of the 10 Lords Commission. She's a physical type character, following the path of harmony. Ah, I remember that face. I saw her on the Return to Darkness like. Correctamundo. Rumor has it, she's one of two sisters skill point dedicated generate to the करने की work power of the रखती है. 10 Lords. She's responsible for predicting karmic offenses and recording corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya reads the karmic sins of criminals and uses her oracle brush to record their punishments. She's good at her job and takes it Looking super pretty, seriously. In the 10 Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She put in the hours, that's for sure. जो main In order gimmick है to वो यही है determine their उसका. sins, वो skill points Hanya वापस reads the memories generate of कर the सकती Mars power struck रखती है. in the form of और भी चीजें हैं dreams. बड़ा. Cool. Sounds like our ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Huohuo, but those sound like credentials. Hey, enough with the Huohuo bullying. मुझे ये दिखाओ But 4-star speaking क्या of है? credentials, it's time to see what Hanya can do on the battlefield. During her basic attack, Hanya uses her oracle brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? I'll get my coat. In addition to dealing physical damage to a single target, Hanya's skill, Samsara Lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. Allies inflict increased damage on enemies marked with burden. And if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden,
they recover a skill point. When the going gets tough, Hanya's got your buff. Hanya's ultimate, 10 Lord's Decree, all shall obey, can increase speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, call in the judge. All that aside, in version 1.5, the new Stagnant Shadow, Shape of Perdition, will appear within the Fixtural Garden map on the Cienjo Lafu. इसमें 2-3 साल बाद कितने bosses add हो जाएंगे ना ऐसे? Materials. Within the same map will also be welcoming Cavern of Corrosion, Path of Darkness. Complete the challenge to obtain 2 brand new cavern relics. Prisoner in Deep Confinement and Grand Duke Incinerated to Ashes. Dot set. Woo! Well, that just about brings us to the final sections of our Haunted Cienjo special program. And the only one not regretting not pulling down. This program isn't nearly haunted enough for my liking. Where are all the ghost stories? You know, beautiful Foxian spirits knocking on your door at midnight. That kind of thing. I think you're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting updates. Thanks again for watching, y'all, and don't go anywhere. We'll be right back after the following commercials. Hey, you there! Sick and tired of the daily grind? Had enough of running errands? Do you long for rapturous applause and cheering voices? How about increased self-confidence and a sense of pride? Then do we have an opportunity for you? The Boulder Town Martial Exhibition is now open for registration. Put yourself to the test by challenging the best. This event will once again be hosted by Scott Business Alliance. Scott Business Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Enter I Am the Ultimate Fighter to register your name. Could you be Boulder Town's new fighting star? Oh, नया event भाई ये तरीका सही था event का दिखाने का. ये तरीका सही था event दिखाने का. A stellar Shadow Seeker recruitment announcement. March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Beautiful scenery, strange encounters, you name it. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. Miss March's memories are in your hands. Madam Herda of the Genius Society is about to launch unlimited beta testing for the newly developed Simulated Universe World 8. Participants will have their costs covered and progress saved for future iterations. In order to participate in this offline confidential beta test, please head to the most mysterious place. ये तरीका अच्छा लगा. Ad break के दौरान event बता रहे. Test participants will be rewarded with a brand new Pentagony Land of the Dreams and Firmament Frontline Glamoth Planar Ornaments. What are you waiting for? Get testing! Good news! The Planar Fisher and Garden of Plenty events are about to begin. It's the version you know and love. ये हर पैच में आता है भाई. Hard work for 3 minutes and get your hands on the rewards together with Argenti. One must explore the essence of beauty to appreciate the depth of chivalry. Yes, it is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, we will be introducing a new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the memo, but we're about to be discussing a night of impeccable elegance. It's time to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti! भाई क्या है भाई ये?
Argenti is a physical type character following the path of erudition. As a devoted admirer of Adrilla the Beauty, Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot. Especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, Imagine helping others as a skin matter ye of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. Just saying? Such is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, but those provided by the Knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I know they forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back. बस टायर के कैरेक्टर कितने टॉल है आप जितने 45 Kind of TMI. 45 But be like I नहीं. still don't really मेरे से understand the छोटे हैं. concept of the beauty. Allow me to explain. Adrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace, all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Argenti's basic attack, Fleeting Fragrance, can deal physical damage to a single target. His skill, Justice Hereby Blooms, can deal physical damage to all enemies. Nice! Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of Adrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes Merit Bestowed in My Garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? So you can choose how much energy to release? That's not all. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly! Stronger combat, faster energy उन्होंने ऐसा बना रखा है regeneration, योगेश more भाई कि जब enemies तक ये to खत्म नहीं होगी वो स्टार्ट नहीं Argenti होगी. giving erudition vibes. मैं दिखा दूंगा. I'm here for it. Argenti's technique, Manifesto of Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking a dazed enemy to enter combat not only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo! Argenti is kind of handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true. Then Argenti fans are in for a fatal surprise in version 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en route to a Washtopia. ये हर बार होता है 10 मिनट. चलो आ गया. 10 मिनट इधर 10 मिनट बाद है बोला ना 40 मिनट. The train stops at Washtopias along its journey. Washtopias specialize in cleaning interstellar craft. There are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too poor chatum.
What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Oh, sure. Anyway, with the driller's blessing, let's move straight on to the version 1.5 warp events. Finally! First off, during the first phase of version 1.5 in the character event warp, Bloom and Green, Trailblazers can obtain the limited 5-star character wah-wah. Yours, my favorite scaredy cat trading judge. During the second phase of version 1.5, we'll be welcoming 2 character event warps. Thorns of Scented Crown. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Argenti. Knight in shining armor. Meanwhile, in Contract Zero, the familiar face of Silver Wolf will be joining the warp. Not to mention the 4-star character Hanya, who will be appearing in both the aforementioned second phase character event warps. Ah, long time no see, Silverwolf. Stacked Argenti and Silver Wolf. Stacked hai. You want to ask her the next time you see her? You first. Silver Wolf ka banner stacked hai. It's time to take a look at version 1.5. Silver Wolf ka banner stacked hai. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star light cone, Night of Fright, will be boosted. While in the second phase of version 1.5, the 5-star light cone, an instance before gaze, will enter the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star light cone, Incessant Rain, will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. Oh, Silver Wolf के banner मेरे लिए क्या stacked है भाई? आस्था दे दी फिर से भाई. 1.5 within the team selection and character ascension screens. Every character will have brand new voice lines. This is a different kind of arena. Promoted again? Oh, new voice line. Is that good or bad? Is that Huohuo's ascension line? More ascension lines. So cute. Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the guest book has a record and message from each visit. Such a neat idea. Additionally, the Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. First up, in Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? It's like this. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replan your maze technique strategy, perhaps. Oh, and I almost forgot to mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered, regardless of whether you met with victory or defeat. Your previous lineup will be waiting for you on the preparation screen. No need for manual selection. Now that's my kind of update. Can't wait for Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Because you don't have to do looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. भाई लेकिन भाई वो सिल्वर वुल्फ का बैनर मेरे लिए बहुत अच्छा है. मैं पूरा पैच सेव कर रहा हूँ और एंड में सिल्वर वुल्फ की टाइम उड़ा दूंगा सारे. भाई साहब बहुत अच्छा बैनर है मेरे लिए. वो सिल्वर वुल्फ का बहुत अच्छा है मेरे लिए. मजा आ जाएगा. तो सारे सपोर्ट्स अच्छे हैं उसके. सारे सपोर्ट्स अच्छे हैं. मोस्टली आस्था चाहिए मुझे उसमें, बट हाँ बाकी सपोर्ट्स भी अच्छे हैं उसमें. So सेकंड वाला बैनर is the way to go for me. Stacked silver wool banner है. Stacked silver wool banner. Silver wool banner पूरा stacked है भाई. वुल्फी खाओ कुल्फी आता है. वो चाहिए बट फोर्टा खराब है तो इधर पीटी बिल्ड करके जाओ. कैन आई ऑल 3 कोड्स में कॉपी पेस्ट कर लूंगा. एक साथ तीनों लाइक कोड स्पेस कोड कर दो कोई.
Hey folks, I'm back. Me too. Me three! Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up Genshin. version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Mega links E4. Aren't you forgetting something, Albert? E6 I'm pretty sure you didn't mention... रूम में बिना जाने से अभी रूम का किट बता रहा हूँ. The thing! That thing? Winky winky. Gift of Odyssey. Thank you, Troy. How could I forget? Really In appreciate it. version 1.5, Trailblazers can Spoil get me their hands more. on 10 warps through the check-in event. There it is. Spoil me more. Gotta love a check-in event. And that's not the only thing to love in version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky stream. Sign me up. As for me, it was all about those unique characters. Huohuo's tail backstory, Hanya's 10 Lords expertise, and Argenti's Spoil me mysterious more. search for the beauty. Can't wait to see them in person. Couldn't have put it better myself. And with that, Trailblazers, I bid you a ये बता कैरेक्टर कैसा onward कैसे journey. न्यू इट Thank you for supporting the IBM. See you in the next one. हो गया. See ya. Trailblaze you later. 2.5 मिनट है. हो गया. हो गया इधर का. अब इधर की बारी. मैस्करेड ऑफ द गिल्टी. हाँ क्या? बस जल्दी बताओ कैरेक्टर कैसे सेंटर की पिटी टोपैज मिल निकल जाएगी हैं? क्या कैरेक्टर कैसे कौन से? अर्जेंटी पता नहीं हुआ अच्छी हीलर लग रही है. मतलब लाइक जो वैसे कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनकी अल्ट वो जो टोपैज जैसे यूनिट्स होती हैं जिनकी अल्ट बहुत फिनिकी होती हैं 1-2 पॉइंट से फंस रही होती हैं ऐसे कैरेक्टर्स के लिए हुआ है. बट हुआ का बैनर बहुत दर्द है. 4 स्टार सारे दर्द है. सो रोएम का किट अभी जितना मैंने देखा है एनिमिटी रोएम का किट ब्रेक इफेक्ट और ब्रेक एफिशिएंसी के अराउंड घूमता है कि वो पूरी टीम की ब्रेक एफिशिएंसी इंक्रीज करती है और ब्रेक इफेक्ट का डैमेज ऐसा कुछ सीन है उसका. बट देखो क्या होगा वहां पे. अभी पूरा किट नहीं पता. ये 2 काम करते हैं उसके किट में. तो मैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी 20 फुल है फिर अब सिल्वर तक सेव और सिल्वर वाले बैनर पे सारे डाउन. 3 फुरीना क्या कर रहे. 3 कहाँ है देखो भाई. 1 2 3 4 मतलब हाँ अगर तुम बोलोगे 1 2 3 हाँ बट हाँ वो तो शुरुआत से ही थ्योरी थी. 3 की एग्जिस्टेंस है. 3 फुरीना का एग्जिस्टेंस स्टार्ट से ही था. 3 सीट्स एग्जिस्ट करती हैं. टोपैज निकाल रहा 90 चाहिए ट्राई कर ले. सिर्फ टोपैज का ही ध्यान रखना. फॉलो अप टीम फिर तुझे बनानी पड़ेगी मतलब जो बाद में फॉलो अप यूनिट आएगी इसके साथ है ना. यहाँ पे एक और फ्रेम है. ऐसा क्या ठीक ऐसा क्या भी क्या इतना ज्यादा. सिल्वर निकालना पुल जाएंगे हमेशा एक पिटी मिल हमेशा एक पिटी हिट करने लायक तो पुल हमेशा मिलते हैं ना नहीं यार तो इस गेम में हमेशा. 3 फुरीना या 3 आइदर 3 हाइड्रोआर्कॉन या 3 पर्सनालिटी ऑफ हाइड्रोआर्कॉन कुछ ना कुछ है. अब हो सकता है हाइड्रोआर्कॉन एक हो बट उसके अंदर 3 पर्सनालिटियां हो. क्यों 3 पर्सनालिटियां. जैसे कि हम जानते हैं पानी कोई भी शेप ले सकता है तो क्या पता उस एक हाइड्रोआर्कॉन के अंदर 2 पुराने हाइड्रोआर्कॉन की मेमोरीज बसती हो क्योंकि हाइड्रोआर्कॉन पानी है ना. Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity,
that you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? Oh! Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you need in? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, the Hydro Archon to be punished via the death sentence. Huh? You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins! Shower me with praise! Let my name echo in song! What's the news? Say cheese! सारे पार्ट का वीडियो आ जाएगा. Breaking news! I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice! This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this? never been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses! Then why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice! We're just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon! Seem to remember the floor will now This begin! trial is... I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusalo. Everyone's... Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. अरे ये कौन है? I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. अरे भाई ये क्या स्टोरी थी, समझ ही में नहीं आई मुझे तो. किसी को समझ, भाई क्या स्टोरी थी, कुछ समझ ही में नहीं आई भाई. ये तो मुझे 10 चीजें हो गई मेरी आंखों के सामने. भाई स्टोरी समझ में नहीं आई मुझे भाई यार इस बार तो. भाई इसको तो डे 1 पे करना पड़ेगा भाई, इसको तो डे 1 पे करना पड़ेगा भाई. इस स्टोरी को तो मैं निपटाना डे 1 पे भाई. पहले फुरीना से पहले स्टोरी निपटेगी. फुरीना से पहले स्टोरी निपटाऊंगा भाई इसकी तो. होली भाई क्या स्टोरी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे पूरी स्टोरी में वो कह रहा था. फुरीना का जीजी, बट वो फुरीना the one who judges shall be judged in the end. Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Maybe.
I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neuvillette, the dragon sovereign of water and Eudex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Neuvillette a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. The special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess. She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh, looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Ooh, interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and is a curtain. Seems like, maybe also Neuvillette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. वो जो ट्रेलर का वीडियो अगर लोड हो जाए YouTube पे तो behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right, so, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So exciting, right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. Oh, you mean Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. But we really need to talk about Farina. She's confronted with because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers' help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well,
Just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys. Have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. One of a kind. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's like, amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Yes. Ooh. Okay, Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Strike a pose! Let the world come alive! Update की Whoa, date? that is Wow. so cool. अगले 8 तारीख. Gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat! What a distinguished little gentleman! Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. अरे भाई. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Sir Intendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. बच्ची है भाई, बुरी बच्ची है. So, Farina is a Hydro Sword user. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Craboletta, Sir Intendant Cheval Moran, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount.
Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Furina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, sure does. Furina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. After Furina uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Oh, nice. Yes. The summons created by Furina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Furina is switched out. Furina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Furina will accumulate fanfare points. That's my trumpet. Amazing. So Furina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Furina's character. It's very showy and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deep water aberrants, Furina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Furina's summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. Oh my gosh, Wow. that is so cool. Yes. Hey, I actually saw that Furina's outfit changes whenever she switches between Arca alignments. Oh yeah. Yeah, good eye. You're correct. Thank you. It does change. But, you know, such is the charm of a celebrity, I suppose. Yes, so if you want to learn more about Furina, then be sure to accompany her on her story quest, the story quest bhi Animula hai. Karaji chapter. Ah, amazing. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. It's Charlotte! Yay! Oh, adorable. So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Tibet. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. system change कर दिया ना. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontainians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute, even has its own little hat and tie. I know! Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. Random Chiori कहाँ से Keep आई? your eyes peeled and your mind engaged. You'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. बाजू निकल पाली पूछा थे. Say cheese! Breaking news!
Leo, photo Leo. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Leo, photo Leo. Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and then, like, what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Wow. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all, there is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will trigger her passive talent called First Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. That is so cool. Yep. That is super rad, and you know, I have a feeling some super cool pictures are gonna come out of that. Oh yeah. We are going to provide more information about the Zoom Lens and how to use it during the event overview portion. So, Farina and Charlotte will both be featured in version 4.2 Event Wishes. Ooh. In the first half of version 4.2, we'll have Event Wishes showcasing Farina and Baiju. During this time, Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. Huge boost. A new 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be featured in the weapon event banner. Weapon banner ke lag gaye. And in the second half of version 4.2, we'll have reruns for Weapon Sino banner ke idhar bhi lag and gaye. Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. It looks like she's Weapon banner ke ek investigating side laga diya bhai inhone. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard in the depths of Fontaine's water. All devouring Dun, dun, dun. narwhal. Oh, it's here already? Oh. Look at that. Well. It looks like it's in a sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw Oh, in yeah, Child's vision at the end of the version 4.1 Archon quest? Yep, it's the same one. After ravaging its way through the primordial sea, this otherworldly creature has at long last broken the seal and descended upon Fontaine. Ooh, it's real big. It feels like it might even burst right through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. But ye kya debuff lag raha hai dekho? Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, okay, wait, is somebody being eaten? Is it even possible
possible to survive something like that? I guess here it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here with a massive sword. These sun creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale? Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4. It was damn cool though. वो transition बहुत cool था. Oh man, this boss looks really, really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the Challenge Failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest. नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा Hopefully, क्या? this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Oh, I love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Hey, that was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah. Oh भाई बहुत अच्छा लगा हुआ है. Holy. वो बॉस का वो ट्रांजिशन अच्छा लगा हुआ है. आगे पूरा का पूरा खा गया मैं. And H की ऑप्शन like imagine like तुम बिल्कुल नया गेम इस प्ले स्टार्ट के तुम घुस गए फॉन्टेन में और गेम ने बोला आ गए अपनी मौत का तमाशा देखने. अभी उसके लिए क्या होगा? मोस्ट प्रॉब्ली उसी के लिए क्या है? फोन पे नहीं है. अरे कोई ना, ड्रॉ है. साइलेंट यूज करने लायक देखो आयुष भाई. साइलेंट करंट 4 स्टार जैसी है. C0 पे ओके कॉन्स्टलेशन मेक्स हर समझ रहे हो. तो शार्लेट का C2, C4 और C6 बहुत अच्छे हैं उसके लिए. जैसे 4 स्टार अब मिहोयो बना रहा है वैसे ही 4 स्टार्स है वो. Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. एकदम बहुत ज्यादा अच्छी ना, बहुत ही खराब. Hello. She works. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughohout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly didn't. Well, you know, maybe New she's area. just Oh, using area it as खुल an गया. excuse to scout out a place for one of her tea parties. Marina and excuses. Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. What a cool place! Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely. Wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Aranea. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. Word And quest? take a look at this. The foggy forest path. हाँ बिल्कुल. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and spoopy. And the water doesn't look quite right. Like it's cloudy or something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like Farina also realized something was Cloudy off. with a chance of Looks like midborn. she headed underwater to investigate. And what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and You mean to say contamination ball? pores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device,
travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. You mean to say We'll ball leave that gaming? for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Araneus Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneus. I'll give you a What hint. quest hai? Melazines are involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Araneus Forest, you'll find Fine, I the wonder. Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the ये middle of the इसकी sea. story देखनी है क्या Perhaps है? it's also guarding some unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower Okay, since then they've you are. arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruined tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. Tower देखना है. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. A human-shaped monster form from the corner of the water. Destinies! In certain underwater cave, a new life form is waking up. It has Hydro greater and more Pulpa. diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix's adventure quest line that was introduced over the last अब ये 2 खत्म होने वाली है. versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of Yes. the map. But Farina's itinerary doesn't stop there. Oh, wait. वाली It quest looks line like खत्म होने she's वाली है. arranged to spend some time with her subjects. What quest खत्म हो रही है? Farina is pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. All right. The Fontaine Fishing Association has recently posted a commission to investigate the Okay, rumors of free. water imps near Araneus Island. Ooh, another investigation. I know. Oh, and Fremine seems to be involved. Free for money. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Huh? Ooh, yeah, for real. More Well, location, children more must be dard. pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I Pretty love cool. that. As our journey Events progresses, मत we'll देखना collect guys, ये colorful आप जानते shells, हैं Genshin corals, game and कैसे other होता है. items which can be used to outfit our Let little it friend be. with weapons and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly.
In the third stage of the event, the Clockwork Penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the Clockwork Penguin will provide different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. This one best. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. I repair penguin, Let's I sleep. see. After helping I the repair penguin, I sleep. the next item on Penguin the fights with itinerary me. is... I woke. Oh, the cute little fungi are back. Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's Fantastic Fiesta. And speaking of fun, guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note, someone folding. While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, thanks! All right. Okay, let's take a look at what else Permanent Karina's game mode? itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. Photo I'm khicho. more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of Most probably counter-criminal photo image khicho event ही recognition. लग रहा है. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Colleen's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. मतलब friends काम आएंगे अब. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Double whoa. Oh my gosh, that's मतलब awesome. अगर आप Genshin में true photographer बनना चाहते हो तो Charlotte निकालो. Amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. मेरे तो Travelers friend will ही नहीं still है. be able to obtain the zoom lens after कौन the से event मेरे? ends. Sweet. It seems like Farina has also learned of the existence Mystery of a Dungeon. domain shrouded in mist. Travelers who master the leyline features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters and It's taking back. advantage of Mystery the Dungeon is buffs okay. brought about by the leyline are also great ways to come out on top. That's right. And travelers Mystery who are more Dungeon confident हमेशा, in their combat skills can choose to jump it's straight like, to okay. the final challenge. Also, the Leyline Overflow event will return at the end of version 4.2. Huh? Now might be the perfect time to start building your parties. Hopefully, ये back to you're back all आ रहा है? excited for the fabulous events that version 4.2 has in store. ये back to back नहीं आते थे ना But पहले? there are still more surprises to share. Yay! I ये know! back to back नहीं आता था ना? Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. ये event कभी back to back नहीं आते थे.
देखते हैं नेक्स्ट पैच में फिर आता है कि नहीं। अगर नेक्स्ट पैच में फिर से आता है तो स्टार रेल से कुछ तो सीख रहे हैं। अगर ये बैक टू बैक, अगर नेक्स्ट पैच में फिर से आया तो ये स्टार रेल से कुछ सीख रहे लग रहा है। अरे मोहित भाई बोल रहे थे ना, स्टार रेल का सेकंड पैच लाइक सेकंड हाफ प्रीमोस के मामले में रहता है, हाँ हमेशा, बट वो उस मामले में अच्छा रहता है, ये वाले रेजिन वाले इवेंट्स के मामले में, उस मामले में अच्छा होता है। हाँ अगर ये बुक्स और मोरा का हर पैच आता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इवेंट्स मत बोलो, बट हाँ हर पैच देते रहो भाई, अच्छा होता है, हर पैच ही आता है, एक पैच बुक एक पैच मोरा। नेक्स्ट पैच आता है कि नहीं, क्योंकि बैक टू बैक 2 पैच आया है, एक पैक बुक एक पैक मोरा। Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww. अरे वाला वीडियो आ गया तो बताना, ठीक है? So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses. And it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce domain section of the adventure handbook. All weekly bosses will be available to challenge except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Story kare. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. Ooh. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double. And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double again. The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. And in addition to the updates to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact Project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Nice. Yeah. Plus, a new story key privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story quests and hang out events. Amazing! Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. There's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the fun guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together.
And honestly, I'm just really glad that we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Toodaloo. मेरे का अकाउंट में ऐसी इन्वेंटरी से मेरा भी है। ओह यार 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को देख लो भाई, 8 तारीख को आ रहा है, 8 तारीख को अपडेट है। ओके हाँ, अगर वाला वीडियो आ गया है तो भेज दो, अगर वाला वीडियो आ गया है तो मुझे भेज दो, मैं को दोबारा चलाऊंगा। अगर वाला वीडियो एग्जिस्ट करता है तो डिस्कॉर्ड पे भेजो। वाला वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट मिस हुआ था, नल का सभी आया नहीं होगा, बट आ गया, डिस्कॉर्ड पे डाल दो फिर, तो वहां से ओपन कर लेगा। खुद देखो, अरे हाँ तो डिस्कॉर्ड तो खोल दो, डालूंगा प्लिट्टी प्लीज। कैसी लगी स्ट्रीम? मुझे वाला पार्ट सही नहीं लगता, ये लोग जो इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं ना, वाला पार्ट बहुत लंबा खींचता है इन लोगों का। स्टार रेल में जैसे उन्होंने इवेंट लाइक एक फटाफट एक्सप्लेन कर दिया ना, इस पर ये थोड़ा इवेंट ज्यादा लंबा एक्सप्लेन करते हैं। मे बी लाइक थोड़ा सा लाइक इनका इवेंट एक्सप्लेनेशन ज्यादा लंबा खींचता है। गेंशिन कोड ड्रॉप करना प्लीज, क्या सारे कोड एक साथ लिख के कॉपी पेस्ट कर दो। को मोहित भाई अगर आ गया हो तो गाचा गपशप में डाल दो जरा, अगर आ गया हो वीडियो तो गाचा गपशप में डालो, नहीं तो फिर हमको ही देखना पड़ेगा। देता गाचा गपशप में करो। अरे वेट नहीं वेट, अगर आ गया तो वाला वीडियो भेजो, मैं देखता। आर्कॉन वाइब नहीं आई फुरीना से, बट एक्साइटेड फॉर आर्कॉन को मैं भी एक्साइटेड हूँ भाई। लाइक वो जो स्टार्टिंग में फुरीना का आर्कॉन को मैं भी एक्साइटेड हूँ। मैं बोला ना फुरीना कभी आर्कॉन जैसी लगती नहीं है भाई, वो मुझे बच्ची सी लगती है हमेशा। फुरीना से कभी आर्कॉन वाइब्स नहीं आती, लाइक छोटे बच्चे जैसे, और लाइक आइदर एक छोटा बच्चा या फिर लाइक बहुत चाइल्डिश नेचर वाली चीज। ऐसा है क्या तुमको भेजा है गाचा गपशप में? ओह थैंक यू। एक सेकंड। According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, the Hydro are come to be punished via the death sentence. दूसरे क्या कोई ना? You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me. You're Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins! Shower me with praise! वाला पार्ट देखना है मुझे समझ आ जाएगा। Echoing song! What's the news? जो चाय वाला पार्ट देखना है। Say cheese!
बट नहीं भाई, अपना तो फास्टिंग डिजायर यूज हो रही है। I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange. अपना on तो the sun. फास्टिंग डिजायर यूज हो रही है। There's something ominous about it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Marina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair people- and just. What is the meaning you would call You have this? never been as Justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. अपना तो फास्टिंग यूज हो रहा है। Why did you deceive us? Applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right. The trial of the Hydro Archon. Seem to remember the right. floor will now This begin. trial is... I now understand the true purpose behind this position. I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one. You are a devious one. Fussalor. Fussalor. Everyone's... Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. अब देखना ये है कौन। I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. I don't know. Maybe. क्योंकि ना फुरीना का क्या सीन है ना, फुरीना की आवाज बहुत बदलती रहती है। अभी तुमने इस पॉइंट पे तुमने फुरीना की आवाज सुनी, कितनी गंभीर, कितनी सीरियस, कितनी ऐसी लग रही थी मैच्योर हो गई है। फुरीना का कुछ अलग ही सीन है भाई। इस वाले पॉइंट पे अगर तुमने फुरीना की आवाज सुनी बिल्कुल एंड में जब वो न्यूलेट को एड्रेस कर रही है, कितनी लाइक मैच्योर, कितनी गंभीर, कितनी सीरियस आवाज है। और ऐसे तुमने सुनी इसकी ऐसी आवाज नहीं ना, तो ये फुरीना का कुछ सीन ही चलता है अलग से। और सिर्फ हाँ भाई उतारा हो सी है फुरीना में कुछ, जो लोग बोल रहे हैं ना कि मल्टीपल पर्सनालिटीज है फुरीना की, वही सीन है कुछ। हाँ, सो किलिंग ऑफ फुरीना आई डोंट नो, क्योंकि उसने बोला ना यू आर ए डीवियस वन। उसने बोला ना लाइक नाउ आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोजिशन, यू आर ए डीवियस वन फोसलॉर। Not mischievous, devious. Devious मतलब devilish से निकला है। सो वही देखना है, क्योंकि आर्कॉन क्वेस्ट ये वाली लग रहा है गॉड टियर हो, क्योंकि इसको देख के कुछ समझ में नहीं आया। इस आर्कॉन क्वेस्ट को देख के लिटरली कुछ समझ में नहीं आया। लाइक बहुत वियर्ड पीसेस जुड़े हुए हैं। याली मैं तो बहुत जल्दी करूंगा भाई। याली आर्कॉन क्वेस्ट मैं आते ही निपटा रहा भाई, आते फटाफट पुल मार के भाग रहा मैं आर्कॉन क्वेस्ट निपटाऊंगा। याली आर्कॉन क्वेस्ट में निपटानी है, ये आखिरी आर्कॉन क्वेस्ट है इस पैच की 4.2 में निपट रही। तुम्हें देखना है क्या स्टोरी है। मजा आ गया से। चलो गाइस, वंस अगेन अगर किसी ने कोड नहीं लिया है तो जो डिस्कॉर्ड पे से ले लेना। अगर किसी को अभी भी कोड नहीं मिला है बता दो, मैं दोबारा डाल दूंगा। 400 का लास्ट स्टोरी है, मतलब आर्कॉन क्वेस्ट यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बाद और भी चीज़ आ सकती हैं, बट हाँ ये अभी तो लाइक आर्कॉन क्वेस्ट यहाँ पे एंड हो रहा है। सो या स्टार रेल का सिल्वर वुल्फ बैनर स्टैग्ड है, मजा आ गई। डीवीएस डिसीविंग, हाँ लाइक किसी तरह का धोखा। और मैं सो के उठा था, कोई दिक्कत नहीं है। और या आर्कॉन का 3 तारीख को 1 हफ्ते के अराउंड मान लो आने वाली है। पैच का रिवर्स का भी पैच आने वाला है। तो चलिए गाइस, जिस तरह मैं चलता हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आई होप सो आपको स्ट्रीम में मजा आया हो।
और मजा आए जब स्टोरी आए करने में. एंड एवरीवन गुड लक फॉर द फुरीना पुल्स. टिल देन स्टे क्लासी, स्टे हेल्दी. गेमर्स रूम साइनिंग आउट. फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से किसी और दिन किसी और समय. टिल देन hasta la vista and